Today we will study biological classification, the science of organizing life. Outlines: we will explore the purpose of biological classification, understand hierarchical classification, and study Linnaean hierarchy with simple and real life examples. By the end of this lecture, you will be able to define biological classification, explain its importance, and understand the principles of hierarchical classification. You will also identify the major taxonomic categories of the Linnaean hierarchy, differentiate between taxonomic ranks, and apply classification concept to real organisms using simple and practical examples. Biological classification is the scientific method of arranging living organisms into groups based on their similarities and differences. Since millions of organisms exist on Earth, classification helps scientists organize this huge diversity in a simple and systematic way. Organisms that share common characteristics are placed into the same groups or classes. For example, fishes are grouped together because they share features like gills and fins. In simple words, classification helps us identify organisms, study them easily, and understand their relationships with one another. It also makes scientific communication more accurate and universal throughout the world. The main purpose of biological classification is to organize the huge diversity of living organisms into meaningful groups. First, classification helps in the storage and systematic arrangement of biological information, making it easier to study. Second, it allows quick recovery of information whenever needed. It also helps scientists correctly identify organisms and predict unknown characteristics based on related groups. Another important purpose is understanding phylogeny, which means the evolutionary relationship among organisms. Finally, classification explains diversity of animals and helps us understand how different organisms are related to one another. Hierarchy means arranging things in order from higher to lower level. In biological classification, organisms are grouped into different taxonomic ranks in a step-by-step system. According to Sampson, hierarchy is a systematic framework in which a larger group contains smaller subordinate groups. For example, the kingdom is the broadest category, while species is the most specific category. Each higher level includes one or more groups below it. This hierarchical arrangement helps scientists organize biological diversity, understand relationships among organisms, and study living things in a simple and systematic way. तो हायरार्की में हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ या स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं. अब किंगडम ब्रॉडर कैटेगरी है या ब्रॉडर रैंक है, जबकि स्पीशीज जो है वो स्पेसिफिक है. अगर हम स्पीशीज की तरफ आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं. अगर हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडर हो जाते हैं. और ये जो पिरामिड बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि किंगडम कम होंगे, उसके अंदर फाइला ज्यादा होंगे, फिर फाइलम के अंदर क्लासेस होंगे, क्लासेस के अंदर ऑर्डर्स होंगे, फैमिली ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज होंगी, फैमिलीज के अंदर जिनरास होंगे और जिनरा के अंदर स्पीशीज होंगी. तो जब नीचे हम आते हैं, नंबर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पेसिफिसिटी कम होती जाएगी, मोर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते जाएंगे और नंबर जो है वो कम होता जाएगा. लाइक किंगडम 5 किंगडम्स है, लेकिन अगर हम स्पीशीज की बात करें तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज. इसी तरह अगर हम फाइलम की बात करें तो देयर आर 32 और 35 फाइलास, लेकिन अगर हम जिनरास की बात करें तो उसके बदले में जिनरास बहुत ज्यादा है. इस तरह फैमिलीज फिर जिनरास से कम है और ऑर्डर्स फैमिलीज से कम है, क्लासेस ऑर्डर से कम है, और इस तरह ये कम होते जाते हैं. और नीचे अगर हम जाएंगे तो ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा. और इस तरह की अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स को हम हायरार्की कहते हैं, जब हम इसको इस तरह कैटेगरीज में या रैंक्स में अरेंज कर देते हैं. Hierarchical classification is a system
in which organisms are arranged into different taxonomic ranks from broader groups to more specific groups. In this system, related species are grouped into a genus, related genera are grouped into families, into orders, and this process continues up to kingdom or domain. Each higher category contains one or more lower categories within it. The lowest and most specific category is species, while higher categories become broader and include more organisms. For example, dogs and foxes belong to different genera like Canis and Velopus, but both are included in the family Canidae. Because they share similar characteristics, this hierarchical arrangement helps scientists understand relationships, organize biodiversity, and study organisms in a systematic and easy way. So it's very simple. हम broader से specificity की तरफ जाते हैं और example में जिस तरह आपने देखा कि दो genres जिस तरह के हो गए Canis और Velopus, इन दोनों में dogs शामिल है और Velopus जो है उसमें आप फॉक्स वगैरह को रख सकते हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये आ जाएंगे फैमिली कैनेडी में। तो देखिए यहाँ पर दो जेनरा थे लेकिन फैमिली इनकी एक है और इसी तरह इनका अब ये तीनों को मिला के अगर साथ में आप पांतेरा को भी कर दे तो अब तीनों को मिला के आप इसको एक ही ऑर्डर में कार्निवोरा में रखेंगे और ये हमें इनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है क्योंकि इनके कैनाइन टीथ्स हैं शार्प और इनके रिट्रैक्टेबल क्लॉज हैं एंड दे आर कार्निवोर। तो इसी तरह हम ब्रॉड स्पेसिफिक से ब्रॉडर की तरफ जाते हैं। This diagram shows how organisms are grouped step by step in hierarchical classification. At broader level, dog-like animals belong to order Carnivora. Within this order, organisms are divided into different families such as Canidae, Felidae, and Mustelidae. In family Canidae, related organisms are further grouped into genera like Canis and Velopus. Now, finally, each genus contained different species. For example, Canis familiaris is the domestic dog, Canis lupus is the wolf, and Velopus velopus is the red fox. This example clearly shows that as we move from order to species, the groups become smaller, more specific, and organisms share more similarities with each other. तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे ब्रॉडर कैटेगरी की लाइक फॉर एग्जांपल कार्निवोरा, अब कार्निवोरा में तो बहुत सारे फैमिलीज हैं और लाइक फॉर एग्जांपल जो भी फ्लैश ईटर्स हैं वो सारे कार्निवोरा में शामिल हैं जिसमें लायंस, लेपर्ड्स, टाइगर्स वगैरह सब आते हैं। लेकिन अगर हम इसमें जस्ट कुछ फैमिलीज ले लें लाइक इन कार्निवोरा देयर इज कैनेडी, फिलेडी और मस्टेलिडी। अब कैनेडी फर्दर डिवाइडेड है कुछ जनराज में जिसमें कैनस भी है, विलोपस भी है। अब कैनस फर्दर डिवाइड है। अब हम देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक से मोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं। लाइक कार्निवोरा में आप देखिए तो एक जनरल कैरेक्टर है कि ये सारे कार्निवोर हैं। अब जब हम कैनेडी में जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं। उससे जब हम जेनस कैनस में जाते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं और जब हम स्पीशीज में जाते हैं तो फिर तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं लाइक कैनस फेमिलियरस डोमेस्टिक डॉग, कैनस लूपस वॉल्फ और कैनस ऑरियस गोल्डन जैकाल। इस तरह Velopus velopus जो है वो रेड फॉक्स। The Linnaean hierarchy is the system of classification developed by Carolus Linnaeus, who is known as the father of taxonomy. He introduced a hierarchical system in which organisms are arranged into different categories based on their similarities and differences. Initially, Linnaeus used five main categories: class, order, genus, species, and varieties. Later on, as more organisms were discovered, additional categories such as family and phylum were added to make classification more organized and accurate. Today, organisms are commonly classified into seven major categories: kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. In this hierarchy, kingdom is broadest category,
while species is the most specific category. This system helps scientists identify organisms, study their relationships, and organize biodiversity in a systematic way. तो स्टार्ट में जो लिनायस था उसने जो 5 कैटेगरीज यूज किए उसमें क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीशीज एंड वेराइटीज था। लेकिन जब ऑर्गेनिजम्स ज्यादा डिस्कवर होने लगे और नंबर ज्यादा होता गया तो फिर कुछ और कैटेगरीज को भी इंट्रोड्यूस करना लाजमी हो गया। तो अब जो बेसिक कैटेगरीज यूज किए लिनायस ने उसमें पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज। और जैसे हमने कहा कि हम स्पेसिफिक से ब्रॉडर की तरफ जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कैनस लूपस इनटू कैनस, जो वोल्फ है उसको हम कैनस जेनस में रख देते हैं, फिर उसको फैमिली कैनेडी में रखते हैं, उसको ऑर्डर कार्निवोरा में, और फिर उसको ममेलिया में, फिर कॉर्डेटा में और फिर एनिमेलिया में। So this example shows the classification of the wolf using the 7 main taxonomic categories. The wolf belongs to kingdom Animalia because it is an animal, and phylum Chordata because it has a backbone. It is placed in class Mammalia since it is a mammal, and in order Carnivora because it is a meat-eating animal. The wolf belongs to family Canidae, which includes dogs, wolves, foxes, and other dog-like animals. It is its genus is Canis, and the species name is Lupus. Together, the scientific name becomes Canis lupus. This example shows how organisms are arranged from broader categories to very specific categories, helping scientists identify organisms and use and understand their relationship easily. In hierarchical classification, scientists use many different taxonomic categories to organize living organisms systematically. Although up to 33 categories have been proposed, about 18 categories are commonly recognized in taxonomy. These categories are arranged from broader groups to more specific groups. The hierarchy starts with kingdom, the broadest category, followed by phylum, class, order, family, genus, and finally species, which is the most specific category. Additional categories such as subphylum, subclass, superorder, tribe, subspecies are used when more detailed classification is needed. Prefixes like sub indicates a lower category while super indicate a higher category. This system helps scientists organize biodiversity, identify organisms accurately, and understand relationships among different groups of organisms. तो जनरली जो हमने कहा 7 कैटेगरीज है वो तो ये हो गए, जिसमें कैनस फेमिलियरिस को डिवाइड किया गया है, लाइक स्पीशीज है फेमिलियरिस, जेनस है कैनस, फैमिली है कैनेडी, कार्निवोरा, ममेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया। लेकिन जो जनरली एक्सेप्टेड कैटेगरीज जो नॉर्मली हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में वो 18 है, और इसमें द ब्रॉडर मोस्ट कैटेगरी कैंडम है, फिर फाइलम है, फिर सब फाइलम है, फिर सुपर क्लास है, फिर क्लास है, फिर सब क्लास है, फिर क्वार्ट है, फिर सुपर ऑर्डर है, फिर सब ऑर्डर है, फिर सुपर फैमिली, फैमिली और सब फैमिली। सुपर फैमिली की एंडिंग ओ आई डी ए ई से होगी, फैमिली की एंडिंग आई डी ई एस ई से होगी, और सब फैमिली की एंडिंग आई एन ए ई से होगी। फिर ट्राइब है, और ट्राइब आई एन आई से खत्म होगा। जेनस है, फिर सब जेनस है या जिसको सुपर स्पीशी भी कहा जाता है, फिर स्पीशीज है और फिर सब स्पीशीज है। तो देखिए जहां पर सब और सुपर इस्तेमाल हुआ है, सुपर ऊपर वाला अबाव है और जो सब है वो बिलो है। और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक इन बर्ड्स हो गई या फिशेस या इंसेक्ट्स हो गई, तो वहाँ पर हमें ये सब और सुपर या ट्राइब या इवन जो पैलेंटोलॉजिकल स्पीशीज है उनमें क्वाड का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर वहाँ पर हम ये कैटेगरीज जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, सब और सुपर उसके साथ लगाकर। In zoological classification, certain taxonomic categories have standardized endings to make identification easier. For example, superfamilies usually ends in OIDAE. Families end in IDAE,
while subfamilies end in INAE, and tribes ends in INI. These standard endings help scientists quickly recognize the taxonomic rank of a group. However, the categories above the families level, such as order or class, usually do not have fixed standardized endings, like superorder or suborder, yeah, superclass or subclass. They don't have standardized endings. Some additional categories, like superspecies, are used only in certain branches of zoology, especially in ornithology, the study of birds. Although botany uses similar hierarchical categories, the standardized endings used in plants classification are generally different from those used in zoology. तो ये स्टैंडर्डाइज एंडिंग सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है. लाइक ट्राइब जो है वो एंड होगा INI, जिसमें आप देखें फिलेनी, FELINI. तो ये INI या FEINI जो है, इससे अंदाजा होगा कि ये ट्राइब का नाम है. तो सब फैमिली एंड होगी INAE. तो कैनेनी और ह्यूमेनी INAE से मतलब होगा कि ये सब फैमिली है. इस तरह पेलेडी और कैनेडी, तो IDAE पे जब एंड होगा तो इसका मतलब होगा कि ये फैमिली नेम है. और सुपर फैमिली को कैसे पहचानेंगे? तो अगर आखिर में OIDAE है, जैसे केनोइडी, मस्टेलॉइडी, OIDEA, तो इसका मतलब होगा कि ये सुपर फैमिलीज हैं. और एंटोमोलॉजी में सुपर स्पीशीज समटाइम यूज हो सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उसमें. तो समटाइम इन ऑर्निथोलॉजी, जिसको बर्ड स्टडी कहते हैं, इसमें हम सुपर स्पीशीज को भी यूज करते हैं. Higher categories are broader taxonomic groups used to organize organisms in a hierarchical classification. These categories include groups such as genus, family, class, phylum and kingdom. और इससे पहले हमने ये कहा था कि जो स्पीशीज है वो क्या है, वो लोअर कैटेगरी है. तो हायर कैटेगरीज जेनस से शुरू होते हैं और किंगडम डोमेन पर जाकर खत्म होते हैं. Now, the category selected for a taxon shows its position or rank in the hierarchy. At species level, organisms are identified mainly on the basis of reproductive isolation and close similarity. However, higher categories are formed by comparing many characteristics and relationships among groups of species. Scientists use comparative data such as morphology, anatomy, behavior, evolutionary relationship to delimit these higher categories. Charles Darwin explained that natural classification reflects genealogical or evolutionary relationship among organisms. According to Darwin, organisms should be arranged in different categories based on their degree of similarity and evolutionary modification. Therefore, higher categories help scientists understand the evolutionary history and natural relationships among living organisms. Thank you for watching. I hope this lecture made the concept of biological classification clear and easy to understand. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends. Your support really helps the channel grow. If you have any question or need further clarification, feel free to ask in the comment section. I will see you in the next lecture. Keep learning and stay curious.